दोस्तों, आज मैं आपको पावर सिस्टम का टॉपिक करवाने जा रही हूँ, जनरेशन एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पावर प्लांट साइकिल का टॉपिक है, ठीक है। पावर प्लांट साइकिल, पहला क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ जनरेशन इन इंडिया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ जनरेशन कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एम ऑफ ऑल एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक। एम ऑफ ऑल एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक इज टू रिड्यूस एनर्जी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस लोड ऑफ पावर स्टेशन स्टैंड फॉर। बेस लोड, दो लोड होता है, एक बेस लोड होता है और एक पीक लोड होता है। पीक लोड कम समय के लिए यूज होता है और बेस लोड जो ज़्यादा टाइम के लिए यूज होता है। तो बेस लोड आपका हो जाएगा इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 12 to 24 आवर्स, ठीक है, बेस लोड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इम्प्लॉयज रंकाइन साइकिल। रंकाइन साइकिल आपका थर्मल पावर प्लांट होता है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट, विच ऑफ देम इज पीक लोड स्टेशन। पीक लोड, पीक लोड आपका हो जाएगा, देखिए, स्मॉल कैपेसिटी थर्मल प्लांट्स, डीजल स्टेशन एंड रन ऑफ रिवर प्लांट। रन ऑफ रिवर यानी हाइड्रो का यहाँ पे बात हो रहा है, तो ये सारे हो जाएंगे पीक लोड के लिए यूज होते हैं। बेस लोड एक तरह से आप समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, पीक लोड जो महंगा होता है तो उसको हम कम यूज़ करेंगे और बेस लोड में ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी वो मुझे सस्ता पड़ना चाहिए, तो जो सस्ता पड़ता है वो उसको हम बेस लोड में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तीनों बहुत महंगे पड़ते हैं। थर्मल पावर प्लांट कोयले का यूज़ होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सब ऐड करके देखें तो बहुत महंगा पड़ता है ये। और डीजल, रन ऑफ रिवर, ये सारे मतलब इसमें आ जाएंगे, पीक लोड में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आपको डिफिनेशन दिया है, द जनरली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमम लोड विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पावर प्लांट इज कॉल्ड बेस लोड। ऑलवेज कनेक्टेड, ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड होता है तो उसको बेस लोड कहते हैं। थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर आर यूज्ड इन बेस लोड, ठीक है ना, ये सब बेस लोड में यूज होता है। और इधर क्या कह रहा है, पीक लोड। पीक लोड क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरियस लोड इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज कॉल्ड पीक लोड। जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए यूज होता है उसे पीक लोड कहते हैं। डीजल स्टेशन टू कैरी पीक लोड, स्मॉल कैपेसिटी थर्मल प्लांट, रन ऑफ रिवर प्लांट यूज्ड एज पीक लोड प्लांट। ये रन ऑफ रिवर, यहाँ पे रन ऑफ रिवर प्लांट अलग है, हाइड्रो अलग है, तो ये दोनों, ये सब पीक लोड के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। नेक्स्ट, the generating station having high investment cost and low operating cost is usually operated as high investment cost, low operating cost। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा तो उसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो फिर ये आ जाएगा आपका बेस लोड में, ठीक है। नेक्स्ट, पावर जनरेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन रैंकाइन साइकिल, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट, which power plant may take several days to start up and shut down। several days to start up and shut down के लिए कौन सा प्लांट होता है, तो बेस लोड प्लांट होता है, ठीक है। यहाँ क्या करा, देखिए, बेस लोड इन पावर प्लांट डज नॉट चेंज देयर आउटपुट क्विकली सच एज लार्ज कोल और न्यूक्लियर प्लांट आर जनरली बेस लोड पावर प्लांट। दे टेक सेवरल डेज टू स्टार्ट अप एंड शट डाउन। एग्जाम्पल ऑफ बेस लोड, थर्मल, न्यूक्लियर, ड्यू टू थर्मल कॉन्स्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैच करना आपका बेस लोड और पीक लोड। बेस लोड में क्या था, न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका आ जाएगा पीक बेस लोड में, और पीक लोड में डीजल और गैस पीक लोड में आ जाएगा। बी का आपका 2 हो जाएगा, 2 और 3 का बी हो जाएगा, ए ही तो होना चाहिए, हाँ ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ पावर सिस्टम, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सभी मेन पार्ट्स हैं। नेक्स्ट, पावर प्लांट यूजिंग कोल वर्क क्लोजली ऑन नोन विच ऑफ द फॉलोइंग। कोल वर्क रैंकाइन साइकिल हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज। कौन जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है, तो 9.9 किलो वोल्ट नहीं है। नेक्स्ट, अ स्टीम इंजन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टीम इंजन रैंकाइन साइकिल। The biggest unit size of a steam plant in India is, biggest unit size of a steam plant कितना है, तो 500 मेगावाट। Next, which of the following is not a type of generating station, not a type of generating station।
एटमोस्फेरिक, ये जेनेटिक स्टेशन नहीं है, न्यूक्लियर, हाइड्रोथर्मल, ये तीनों है। सुपर थर्मल पावर स्टेशन आर बीइंग इंस्टॉल्ड एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट नरोरा. If the normal system frequency is 50 and it is operated at 53 Hz, the equipment on the system most adversely affected is क्या हो जाएगा, इस टर्बाइन हो जाएगा. जनरेशन वोल्टेज इज यूजली, जनरेशन वोल्टेज यूजली क्या होता है, बिटवीन 11 to 33 के भी होता है जनरेटिंग वोल्टेज. ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीक लोड पावर प्लांट. पीक लोड पावर प्लांट नहीं है तो कौन सा नहीं है, पीक लोड नहीं है, थर्मल नहीं है, थर्मल आपका बेस लोड है. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट कैन बी यूज एज बोथ बेस लोड एंड पीक लोड. दोनों में यूज होता है, तो कौन सा है वो, स्टोरेज हाइड्रो टाइप प्लांट, ये दोनों में यूज होता है, बेस लोड में भी और पीक लोड में भी. नेक्स्ट, generators for peak load plant are usually designed for maximum efficiency at generator for peak load plant are usually designed for maximum efficiency at 50 to 25% of full load. Next है sorry. Next, which of the following type of power plant is not used as a base load power plant. not used as base load plant, ये कौन सा हो जाएगा, आप बेस लोड के लिए नहीं यूज होता है, तो पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट नहीं यूज होता है बेस लोड के लिए. नेक्स्ट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सुटेबल फॉर पीक लोड. डीजल, स्टीम, न्यूक्लियर. पीक लोड के लिए आपका ये हो जाएगा डीजल. द अनवेयरिंग लोड विच अकर्स ऑलमोस्ट होल डे ऑन द स्टेशन इज नोन एज होल डे, तो बेस लोड. ठीक है, नेक्स्ट, which of the following power station is mainly used to cover peak load on the system. obviously mainly used to cover peak load, आपका peak load के लिए गैस हो जाएगा, यही हो जाएगा, गैस पम्प स्टोरेज हाइड्रो प्लांट. mainly used to cover peak load, पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट हो जाएगा. अच्छा, यहाँ गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट था ना, इसलिए ये बेस लोड में आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये आपका न्यूमेरिकल है, देखिए. ए कोल फायर्ड स्टीम पावर प्लांट इज वर्किंग एट ए पावर प्लांट लोड फैक्टर दिया है 90%. इट हैज़ 400 मेगावाट जनरेटिंग यूनिट. इफ द हीट कंटेंट ऑफ द लोड इज 2 kWh per kg, द ओवरऑल प्लांट इफिशियंसी 60% एंड अ ट्रेन लोड ऑफ कोल इज 900 metric ton. हाउ मेनी ट्रेन लोड ऑफ कोल आर रिक्वायर्ड डेली. यहाँ क्या किया है, जनरेटेड एनर्जी इन अ डे, जनरेटेड एनर्जी इन अ डे निकाला है, जनरेटेड पावर इंटू 24. ठीक है, ओवरऑल इफिशियंसी, आउटपुट जनरेटेड बाय इनपुट, आउटपुट जनरेटेड दिया हुआ है मेरा कितना आ गया, बाय इनपुट 0.6. इफिशियंसी दिया जहाँ से इनपुट निकल गया. ठीक है, नेक्स्ट, और क्या है, टोटल कोल, इनपुट बाई हीट कंटेंट, इनपुट बाई हीट कंटेंट, टोटल लोड निकल जाएगा. ऑन ट्रेन लोड 900 मीट्रिक टन, द रिक्वायर्ड ट्रेन लोड, टोटल बाई ट्रेन लोड, टोटल कोल बाई ट्रेन लोड, यहाँ से निकाला है. वैसे ये आपको प्री का क्वेश्चन नहीं है, ये मेंस का क्वेश्चन हो सकता है, प्री में नहीं पूछेगा. नेक्स्ट, at the time of peak load a power system need at the time of peak load a power system needs injection of lagging VAR. Next, which of the following is an example of conversion of heat energy to mechanical energy. Conversion of heat energy to mechanical energy, steam engine. Next question. अच्छा, ये आपका पावर प्लांट खत्म हो गया, वो टॉपिक खत्म हो गया, पावर प्लांट साइकिल. तो इतने क्वेश्चन थे. नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट. चलिए देखते हैं थर्मल पावर प्लांट का पहला क्वेश्चन. इन अ थर्मल पावर प्लांट इकोनोमाइजर इज यूज्ड टू हीट फीड वाटर. इकोनोमाइजर इज यूज्ड टू हीट फीड वाटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
The problematic pollutants in emission of coal-based generating plant. The problematic pollutants in emission of coal-based generating plant is SO2, CO और NO2 होना चाहिए, NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड का ये लिखा है, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। The part of a steam power plant that extract heat from the flue gases before applying to the boiler is, पार्ट ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट कौन सा है, दैट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस, जो फ्लू गैसेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है बिफोर अप्लाइंग टू बॉयलर, इज इकोनोमाइजर। ये इकोनोमाइजर का काम होता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं देखिए, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर इज अ मैकेनिकल डिवाइस intended to reduce energy consumption to perform useful functions such as preheating of fluid. The part of a steam power plant that extract heat from flue gases before applying to the boiler is called economizer. Next question है, which of the following heat exchanger is used to raise the temperature of a steam from normal to supersaturation level? Which of the following heat exchanger is used to raise the temperature of a steam from normal to supersaturation level? तो ये है सुपर हीटर। नेक्स्ट है, which of the following treatments for water is used to remove the non-carbonate hardness? Non-carbonate hardness के लिए सोडा ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, the hoppers in electrostatic precipitator are generally in shape. Hoppers in electrostatic precipitator are generally pyramidal in shape. Next, the purpose of cooling tower is to cool the steam in the condenser. Air pollution due to a smoke around a thermal power station can be reduced by installing, क्या हो जाएगा, air pollution due to a smoke around a thermal power station can be reduced by installing electrostatic precipitator. Which of the following is a conventional source of electricity generation? Conventional source of electricity generation हो जाएगा thermal. Next question है, in a thermal power station, a typical heat balance sheet for large turbine and surface condenser taken together is the percentage distribution of heat energy in work done or thermal efficiency, friction and windage loss, heat to circulating water, heat in condensate to be retained to the boiler. The percentage amount of heat in the heads state above in the descending order is, descending order में क्या हो जाएगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपका 3, 1, 4, 2 है, ठीक है। हीट टू सर्कुलेटिंग वाटर, वर्क डन और थर्मल इफिशियंसी, हीट इन कंडेंसेट टू बी रिटेन्ड टू बॉयलर एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ 3 element feed water control in a coal fixed thermal power station, measurement of level of water in the boiler drums are made so that water level does not वायलेट होना चाहिए, हाँ सही है, डज नॉट वायलेट अ स्पेसिफाइड अपर एंड लोअर लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ मॉडर्न कोल फायर्ड अ स्टीम राइजिंग थर्मल पावर प्लांट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अबाउट 0.35 मेनली बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी लॉस फ्रॉम टर्बाइन एग्जॉस्ट टू कंडेंसर। नेक्स्ट है, मेजर शेयर ऑफ पावर इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड through thermal power plant. Major share of power in India is produced through thermal power plant. Next question है, next question आपका है, the economizer of a steam turbine is located in the feed water circuit. Which of the following generating power station require lot of time for sharing, lot of time for starting के लिए लॉट ऑफ टाइम लेता है आपका स्टीम पावर प्लांट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन थर्मल पावर प्लांट इज कंडेंस यूज्ड स्टीम इनटू वाटर। खालिद इज नॉट अ कंपोनेंट इन थर्मल पावर प्लांट, उसका कंपोनेंट नहीं है। चिमनी, रिएक्टर, बॉयलर, इकोनोमाइजर, रिएक्टर नहीं है, रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। नेम द जनरेटिंग स्टेशन वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू अ स्टीम, थर्मल पावर प्लांट। विच टाइप ऑफ फैन यूज्ड बिटवीन डस्ट कलेक्टर एंड चिमनी, डस्ट कलेक्टर और चिमनी के बीच इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन होता है। नेक्स्ट,
The air preheater in thermal power plant is called as efficiency increasing equipment. Forced on fan handling, which type of air? Forced on fan handling आपका hot air होता है, सॉरी cold air. Forced on fan handling cold air. Overall efficiency of a steam power plant is about 29%. What is the name of power generating station which use coal? Thermal power station. Next question है आपका. In a thermal power plant, feed water heater, superheater and air preheater are mainly used to increase the efficiency of plant. Coal used in power plant is also known as steam coal. Binary vapor cycle are used to increase the efficiency of plant. The draught produced by chimney of given height at given outside temperature increases if chimney gas temperature increases. The overall efficiency of a steam power plant is defined as overall efficiency of a steam power plant, heat equivalent of heat of combustion of coal, heat equivalent of electrical B होना चाहिए 29 का BS, heat equivalent of electrical output by heat of combustion of coal. Overall efficiency of thermal power plant होता है. Next, the prime mover used in thermal power plant is prime mover होता है steam turbine. In a steam power plant, condensate from condenser is used as feed water to boiler. क्या करा? स्टीम पावर प्लांट है, थर्मल इफिशियंसी दिया है 30%, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी 90%. व्हाट इज द ओवरऑल इफिशियंसी? ओवरऑल इफिशियंसी थर्मल इंटू इलेक्ट्रिकल हो जाता है, तो यह आ जाएगा आपका 27%. नेक्स्ट, ए मॉडर्न कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन कंज्यूम अबाउट 10% ऑफ its power for supplying to the auxiliaries. Next, which of the following fuel is used as a fossil fuel in electric power generation? Which of the following fuels is used as fossil fuel in electric power generation? कोल ही तो होगा 34 का. यस, कोल फॉसिल फ्यूल के रूप में कोल यूज होता है. नेक्स्ट है, identify the non-renewable source of energy from the following. non-renewable यानी conventional source of energy क्या है आपका? फ्यूल सेल, विंड, वेव, कोल का कोल हो जाएगा. non-renewable source of energy कोल. Which of the following device is suitable for removal of gaseous pollutant? के लिए है वेट कलेक्टर. रिमूवल ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट, वेट कलेक्टर. द टर्म लाइव स्टोरेज ऑफ कोल इन पावर प्लांट रिलेट्स टू a storage of coal sufficient to meet 24-hour demand of plant. Which of the following is practically suitable for coal fired thermal power plant? के लिए रैंकाइन साइकिल होता है. नेक्स्ट है, द ड्राउट प्रोड्यूस्ड बाय चिमनी इज नेचुरल ड्राउट होता है. इसको ऐसे पूछा, नेचुरल ड्राउट इन स्टीम पावर प्लांट इज प्रोड्यूस्ड बाय चिमनी. विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज लीस्ट इफिशियंसी? लीस्ट इफिशियंसी होता है स्टीम पावर प्लांट. 29%, हाइड्रो 85%, डीजल 42, न्यूक्लियर 32-37. सबसे ज़्यादा हाइड्रो का. नेक्स्ट, optimal scheduling problem in case of thermal power plant can be completely solved at any desired instant. Case 1 with reference to operation at other time. B, without reference to operation at other time. ये ही होगा. बी आंसर दे रहा है आपका. B होगा without. The optimal scheduling problem in case of thermal power plant can be completely solved at any desired instant without reference to operation at other time. Next, calculate the overall efficiency of a steam thermal power plant. If boiler efficiency 85, turbine 40, alternator efficiency 95.
ओवरऑल इफिशियंसी बॉयलर इंटू टरबाइन इंटू अल्टरनेटर इफिशियंसी कर देंगे. टरबाइन इफिशियंसी ऑफ स्टीम थर्मल पावर प्लांट वैरीज बिटवीन 25 to 35%. For the proper combustion of fuel in thermal power plant, a proper circulation of air is also needed. The same is provided with the help of draft fan. Superheater is employed to remove moisture from vapor, increase temperature of vapor, heat the feed. Which of the following statement is correct? सुपरहीटर इज एम्प्लॉयड टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम वेपर सही है, इंक्रीज टेम्परेचर वेपर ये भी सही है, हीट द फीड ये गलत है, तीसरा हो जाएगा बी. What is superheated with the help of magnetic separator in coal preparation plant? Iron particles. The exact direction of fan for completing the induced drought should be near the bottom of chimney. In a steam power plant, working fluid is water. Which of the following is not a part of a steam power plant? Diffuser is not a part of a steam power plant. With reference to a steam electric power plant, which of the following is pulverized fuel burner, cyclone burner? Pulverized fuel burner, cyclone burner. Next, efficiency of weight electrostatic precipitator is 99.5%. Weight electrostatic precipitator 99.5%. The pulverized coal boiler generates approximately 80% fly ash and 20% of water mass. Which of the following is correct sequence of heat transfer of water in a generator? Economizer, evaporator, superheater. Which of the following impurity causes temporary hardness in feed water? Temporary hardness in feed water, bicarbonate. For a thermal power plant, which of the following is correct sequence of flue gases flow? Correct sequence of flue gases flow है बॉयलर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, इंड्यूस्ड फैन और चिमनी. यही है बॉयलर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, इंड्यूस्ड फैन और चिमनी. इन अ स्टीम पावर प्लांट, Class-1 heats the feed water on its way to the boiler by deriving heat from flue gases. Economizer. Which of the following is not a part of a steam power plant? Surge chamber. First thermal power plant of India is Hussain Sagar thermal power plant. Air forced into the tower in mechanical draft cooling tower by using propellers. The function of electrostatic precipitator in a coal-based thermal power plant is to collect dust from flue gases. Class-1 is present between air preheater and induced fan in a thermal power plant. Electrostatic precipitator. The efficiency of modern steam turbine is about 85%. Overall efficiency of thermal station is less than 40%. The main function of economizer of a boiler in a plant is to reduce fuel consumption. Superheater is used in thermal power plant to reduce moisture content of steam. Next. Which of the following coal has highest calorific value? Highest calorific value anthracite coal. Anthracite 7600 से 7800, बिटुमिनस 42 से 70, लिग्नाइट 42 कैलोरी 4200 मतलब पीट 3500. Quality of coal generally received by cement plant in a country has an ash content in the range of 30 to 40%. Heating value of coal is approximately 5000 से 6500. Heating value of coal 5000 to 6500. The equipment installed in power plant to reduce air pollution due to smoke is electrostatic precipitator. Most of the generators in thermal power plant runs at 3000 rpm. Synchronous generator used in thermal power plant have cylindrical rotor. Next. Electrostatic precipitator is used for particulate emission control. In a steam power station, the condensate created by very low pressure at the exhaust of turbine. The advantage of using pulverized fuel include high boiler efficiency, easy and complete combustion, low air refresh requirement, all of the above. In thermal power plant, pressure of working fluid cycle is developed by feed water pump होगा. Yes. In a thermal power plant, pressure of working fluid cycle is developed by feed water pump
The pH value of water used for boiler of thermal power plant is slightly more than 7. The location of a steam generating station is determined by center of gravity of load, availability of water, facility of delivery of coal and passage, all of the above. Which of the following feed water treatment is basically one type of thermal treatment? Duration. In a steam power plant, which of the following is not an artificial drought? Chimney drought. Next है, which of the following unit requires a boiler, superheater, economizer and air preheater? Steam generating unit. Next question. In a steam power plant, blow down is basically nothing but wastage of water from the boiler. In a steam power plant, value of the reheat factor is of the order of 1.1 to 1.5. In a steam power plant, function of economizer is utilized the waste heat of flue gases for heating the feed water. In a thermal power plant, a condenser is installed to condense exhaust steam coming out of turbine. Next, which type of generating system convert heat energy of coal into electrical energy? Heat energy of coal into electrical energy, a steam power station. Which one is the systematic arrangement of a steam power station? Systematic arrangement of a steam power station: coal and ash handling, steam generating plant, steam turbine, alternator, feed water, cooling arrangement. सही तो है, और क्या है? स्टीम जनरेटिंग प्लांट, स्टीम टरबाइन, फीड वाटर, अल्टरनेटर, कूलिंग अरेंजमेंट, कूलिंग अरेंजमेंट, फीड, यही होगा. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्टीम पावर स्टेशन? नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्टीम पावर स्टेशन. प्राइम मूवर है, कंडेंसर है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सब है. द नेम इकोनोमाइजर इज रिलेटेड विथ स्टीम पावर यानी थर्मल पावर. In power system, the governor are generally used as an essential part of all types of turbine to control the frequency. Economizer is used in thermal power station in order to improve the efficiency of plant. Compounding of a steam turbine is done. Compounding of a steam turbine is done for reducing the rotor speed. Next है, the overall efficiency of thermal power plant is equal to boiler, turbine, generator, all. The effect of considering friction in a steam nozzle for same pressure ratio leads to increase in dryness fraction of exit steam. In a steam turbine, the reheat factor increases with increase in number of stages. Which one of the following fuel has lowest calorific value? Lowest calorific value, lignite. The pressure at the furnace is minimum in case of a balanced out system. Commonly used material of condenser tube is Admiralty brush. The formation of small and stable bubbles throughout the boiler water is called foaming. In a grid system, the thermal plant operates as a base load plant. Which type of coal is best suited for thermal power plant? Anthracite coal. What is the relation between thermal efficiency, electrical efficiency and overall efficiency? Overall thermal into electrical हो जाता है. Next question है, in a thermal power plant, which of the following is not a mechanical drought? Mechanical drought नहीं है, chimney drought नहीं है. Not a mechanical drought, chimney drought. The loss in drought in a chimney is 20% of total drought produced by it. Which of the following is correct sequence of step in coal handling system? Coal delivery, precipitation, implant handling, furnace firing. Next, which of the following system is associated with ash handling in thermal power plant? Ash handling in thermal power plant, electrostatic precipitator. Which part of a steam power plant convert mechanical energy into electrical energy? Generator. Boiler efficiency can be improved by 4 to 10% due to economizer. Which of the following is not one of the advantage of thermal power plant? Operating cost is low as compared to nuclear and hydro plant.
rapidly changing load without any difficulty, required less space compared to hydro. Fuel used is mainly coal, which is quite inexpensive. एडवांटेज नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो कंपेयर टू न्यूक्लियर एंड हाइड्रो, ये गलत. नेक्स्ट, select from the following option the incorrect use of ash of a steam power plant. Ash is used in production of concrete. Ash is widely used in production of cement. From the ash, metals such as ferrous, silicon and titanium can be recovered. Because of their residual value, they are used for treating neutral soil, which increases the wheat, sugar cane etc. Incorrect कौन सा है? Which of the following is incorrect? मतलब ये था. नेक्स्ट हो जाएगा आपका, which of the following is not the reason why mechanical handling of coal is preferred over manual handling in a steam power plant. Capital cost of the preferred handling system is low. Rajasthan is one of the type of electrical dust collector from a steam power plant, rod type. Which of the following is not a correct component of modern steam power plant? Not a correct component of modern steam power plant, induced drought mill. Which of the following is not an advantage of pipeline coal transport system for thermal power plant? Not, which is not an advantage of pipeline coal transport system for thermal power plant. Loss of coal during transport due to theft and pilferage is partially eliminated. Which of the following is not one of the following commonly used equipment for ash handling in large and medium sized steam power plant? Pneumatic conveyors, trolley or rails, belt conveyors, bucket conveyors. Belt conveyors नहीं है. Soil lump fuel of for steam boiler are handled by stokers. Which of the following is not an essential requirement of a steam power station? Not an essential requirement of a steam power station design है. Maximum capacity, capital cost. Figure out the incorrect region from the below point for which ash needed to be quenched before handling in a steam power plant. It reduces dust accompanying of ash. It reduces temperature of ash. Ash from cleaners by fusion is large lumps and by quenching cleaner will disintegrated. Quenching maintain corrosion action of the ash. इसका सी डी होगा, ये होगा. क्वेंचिंग मेंटेन कोरोजन एक्शन ऑफ आश. तो ये थर्मल पावर प्लांट ख़त्म हो गया है. नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट, ये नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी. थैंक यू, बाय बाय.